हाय एवरीवन। सो लाइक आपके और आपके रूममेट के बीच में ये डिस्कशन तो होता होगा कि आज हम डिनर में क्या बनाएं। सो लाइक आई एम गोइंग टू शेयर अ सिंपल रेसिपी. It's called Chuda Matar with you all. So we will need like only few ingredients. So I have taken ginger, coriander, and this chili, and I have took 200 grams of green pea, and here I have chuda. I will be using pan to make this chuda matar. Turn on your gas, let the pan get heat. I will be using little bit of ghee and little bit of refined oil. But the pan is hot now. I am adding little bit of ghee, little bit of refined oil. Now we have to add jeera, little jeera, then add your green chilies and ginger. Stir it. Now quickly add haldi, little bit of haldi. Okay. Quickly add water. In water add green peas. अब हमें थोड़ी देर ढक के रखना है ताकि हमारा मटर गल जाए. वेट एंड कवर इट अप. नाउ वेट और चेक करते रहना कि आपका मटर गल गया. ओके, सो मेरा मटर गल गया है. आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट. तो चूड़ा डाल देते हैं. लाइक इतना पानी डालना कि चूड़ा का सूखा ना लगे, कंप्लीटली सोक कर ले. थोड़ा सा जीरा पाउडर और काली मिर्च, थोड़ा और थोड़ा सा गरम मसाला. दैट्स इट. मिला लो. थोड़ी देर ढक के रख दो ताकि ये चूड़ा थोड़ा फुल सा जाए. 3 से 4 मिनट बाद लेटा डाल देना. यू कैन सी चूड़ा फुल चुका है. It's complete almost. We have to just add some coriander. थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं. That's it. Our chura matar is ready.